will learn the one more new topic. Chapter number 12, prepositions. So today we will learn about the prepositions of place. Today we will learn the prepositions of place. So what is the meaning of prepositions of place? So let's see here. Prepositions of place tell us where a person, a place or thing is. हमको preposition of place क्या बताता है कि person or a place or a thing where it is, right? Okay students, so now I am giving you few examples. Suppose ball is on the table. बॉल टेबल के ऊपर है ना, राइट? तो बॉल इज ऑन द टेबल. ओके, सो प्रीपोजिशन इज ऑन. द बॉल इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है, राइट? हियर वन बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. ट्री के नीचे बैठा है, राइट? सो वी यूज प्रीपोजिशन अंडर, right? Okay, if suppose I put something here, so what I write? This object is under the table because table के नीचे है और ball table के ऊपर है, so we write the ball is on the table. If ball is downstairs, so what we write? The ball is under the table. Okay, like here the boy is sitting under the tree. Tree के नीचे बैठा है. Okay, so under, on, above, all these are the prepositions. Okay students. Okay students, so now let's move to the exercise 8. Complete these sentences with in, on, under. So we have to complete these sentences with the help of preposition, these three: in, on and under. Okay, so now let's move to the first example. The mouse is dash the table. Mouse कहाँ है? टेबल के नीचे. So what we write? Under. The mouse is under the table. Okay, clear? Now next sentence is the flower vase is dash the table. Flower vase table के ऊपर है. So what we write? On the table. What we write? On the table. The flower vase is on the table. Okay. Next sentence is Tej is dash the swimming pool. तेज स्विमिंग पूल के अंडर है? नो. इन है? यस, तेज इज इन द स्विमिंग पूल बिकॉज वो स्विमिंग पूल के अंदर है. सो वी राइट इन. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई बुक इज dash the drawer. My book is in the drawer. देखो ड्रॉवर के अंदर पड़ी है बुक. कैन यू सी? बुक इज इन द ड्रॉवर. सो माई बुक इज इन द ड्रॉवर. अगर बुक आपकी यहाँ पड़ी होती तो हम क्या लिखते? माई बुक इज. टेबल के ऊपर पड़ी होती तो व्हाट यू राइट? माई बुक इज ऑन द टेबल. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज Pia keeps her books dash her desk. Pia keeps her books on her desk. Why? Because desk के ऊपर है, right? अगर नीचे होती तो क्या लिखते? Priya keeps her book under her desk. Okay. Now next sentence is the boy sits dash the rock. रॉक के नीचे है बॉय? नो. तो the boy sits on the rock. The boy sits on the rock. The ball rolls
dash the table. The ball rolls under. Why? Because table के नीचे है. The ball rolls under the table. Okay. Now next sentence is the river flows dash the bridge. River कहाँ? ब्रिज के ऊपर फ्लो हो रही है? नो, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, so your concept is clear that where we are using in, where we are using on and where we are using under. Okay students. Okay students, so now let's move to the next exercise. Choose the correct words to complete these sentences. We have to choose the correct words to make the sentence complete. Okay, according to the sentence, we have to choose the correct preposition. Okay, so now let's move to the first example. The boys are swimming on in the river. So the boys are swimming in the river. Now your question is, ma'am, how in the river? So हम जो बॉयज है पानी के अंदर स्विम कर रहे थे ना, सो इन, पानी के ऊपर तो कोई स्विम नहीं कर सकता है ना, राइट? सो वी हैव टू राइट इन. द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड नंबर. देयर इज अ स्क्वेरल ऑन इन द वॉल. देयर इज अ स्क्वेरल ऑन or in the wall. So answer is on the wall. Squirrel wall के ऊपर होती है, wall के अंदर कैसे हो सकती है, right? So there is a squirrel on the wall. Okay. Next sentence is the leopard is sitting on in the tree. Tree के अंदर बैठ सकता है leopard? No. So the leopard is sitting on the tree, means tree के ऊपर. Okay. Next example is Geetu parks her cycle under on the tree. So Geetu parks her cycle under the tree, means tree के नीचे आप साइकिल छांव में पार्क करोगे ना, राइट? लाइक ट्री के नीचे आप साइकिल पार्क करोगे. आप ट्री के ऊपर कैसे साइकिल पार्क कर सकते हो? आप ट्री के ऊपर चढ़ने जाओगे और साइकिल पार्क करने जाओगे? ऑफ कोर्स नो. सो Geetu parks her cycle under the tree. Okay. Next sentence is I see Meena standing under or in the park. So what comes? I see Meena standing in the park. Park के अंदर. Park के नीचे कैसे बैठ सकते हैं? No, it is not possible. So the I see Meena standing in the park. Okay. Next sentence is grandmother is sitting on under the bench. Grandmother bench के नीचे बैठ सकती है? Obviously no. So the grandmother is sitting on the bench. bench के ऊपर बैठे हैं ना grandmother, नीचे कैसे बैठ सकते हैं? So grandmother is sitting on the bench. I am repeating again all sentence with the correct prepositions. The boys are swimming in the river. There is a squirrel on the wall. The leopard is sitting on the tree. Geetu parks a cycle under the tree. I see Meena standing in the park. Grandmother is sitting on the bench. Okay, now this concept is clear to you? Okay. Refer this video. We will provide you homework in our group. We will interact soon in online session for your queries and homework.